Welcome to Surya Shikshak once again, students. Today we are going to read English NCERT English Supplementary Book Chapter 1, that is A Tale of Two Birds. पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Found a different home. Okay. There once ये जो होता है स्टोरी, इसमें एक फॉरेस्ट में एक मदर बर्ड जो है दो यंग वंस को बर्थ देती है और वो लोग मदर बर्ड जो है मर जाती है स्टॉर्म की वजह से और वो दोनों बर्ड्स जो है सेपरेट हो जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली लोग बच जाते हैं और अलग हो जाते हैं. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ द लिटिल वंस डे बाई डे. One day there was a big storm, there was thunder, lightning, and rain. The wind blew down many trees. The tall tree in which the bird lived also came down. The big, heavy branch hit the nest, killed the bird. Unfortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram, a little distance away. अब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे जो है बर्ड थी, उसने अपने न्यूबॉर्न बर्ड्स को जो है बर्थ दिया था और एक दिन स्टॉर्म आया. स्टॉर्म में उनकी माँ मदर बर्ड जो है वो मर गई. अनफॉर्चुनेटली वो दोनों बच गए. तो दूसरा ये दो बर्ड्स बचे थे, ये एक तरफ जाके रॉबर्स के उसके केव के पास गिरता है और एक तरफ ऋषि के आश्रम के पास गिरता है. Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of country came to the forest to hunt. बहुत दिन बीत गए और एक दिन जो है उस कंट्री का उस कंट्री का जो किंग था वो वहाँ पे हंट करने आया था. तब तक ये बर्ड्स बड़े हो गए थे. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by king. He rode on for a long time till he came to the other side. For the very tired now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels, his horse. Hurry up, or else he will slip away." The king ashamed. He looked up and saw a big brown bird on the tree in which he was sitting. He also heard faint noise issuing from the cave. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was Rishi's ashram. King tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself aloud. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he made friends with robbers. He now talk as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then Rishi entered the ashram. तो बर्ड ने है ना किंग को सारी जानकारी दी कि वो मेरा ही भाई है, वो मुझसे बिछड़ गया था, वो रॉबर्स के साथ रहता है इसलिए वो ऐसी बातें करता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब ये केव के पास किंग बैठे थे तो वो दूसरा वाला बर्ड बोलता है कि जल्दी से इसके ज्वेल्स लूट लो, इसके हॉर्स छीन लो, नहीं तो ये निकल जाएगा. और जब ये यहाँ आए तो यहाँ पे इस बर्ड ने इनका स्वागत किया, इन्हें बताया पानी रखा है, आप पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, तब तक ऋषि आएंगे. इस दोनों चीज़ों को देख के किंग जो है एकदम आश्चर्य थे, अमेज्ड थे. तभी जो है ऋषि आ जाते हैं और बर्ड उनको तब तक बताता है कि वो मेरा ही भाई था. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो बता रहा होता है बर्ड कि सर वो मेरा ही भाई है, मैं अब उससे बात नहीं करता क्योंकि उसने जो है रॉबर्स को अपना फ्रेंड बना लिया है. "वेलकम सर," सेड द किंग. "प्लीज़ कम इनसाइड एंड टेक योर फूड." The king told the rishi the story of two birds and how each have behaved so differently though they looked alike. "The forest is full of surprise," he said. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company
One keeps the and that bird always heard the talk of robbers. He intimated and the talks about robbing people. This one has repeated that he has always heard. He welcomes people to the ashram now. Come inside and rest. I will tell you more about this place and birds. तो यहाँ पे जो है ऋषि दोनों बर्ड्स के बारे में उनको बताते हैं, उनको सारी जानकारी देते हैं कि दोनों बर्ड्स कैसे सेपरेट हो गए थे और सेपरेट होने के बाद कैसे एक बर्ड रॉबर्स के केव के पास गया, तो जैसे एक रॉबर्स बात करते हैं वैसे ही वो बर्ड बातें करता है, और कैसे ये बर्ड आश्रम के पास गिरा तो ये आश्रम के बारे में बातें करता है। उन्हें बताया कि एक इंसान वैसा ही बनता है जैसा कि वो संगत पाता है। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे हमें सीख ये मिलती है कि हम जैसी संगत में रहते हैं हम वैसी ही चीज़ें सीखते हैं। तो कैसा लगा आपको चैप्टर? अच्छा लगा तो लाइक करिए, और आने वाले और नए ऐसे ही अपडेट्स और सूर्य शिक्षा के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।